माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 121 श्री रोडूमल नागर जी। जन्मदिन है आज रोडूमल जी का, बधाई हो। Sir, a statement is placed on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में अनेक बेघर लोग फुटपाथ, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर दिखाई देते हैं। बेघर लोगों की पहचान और उन्हें आश्रय प्रदान करने की ऐसी कोई योजना है क्या? बेघर के प्रकार और प्रकृति के वर्गीकृत करने का सरकार का कोई तंत्र कोई विकसित किया है क्या? Sir, land and colonization are state subjects, and therefore it is not just primarily but essentially the responsibility of the state government to measure, to provide facilities for homeless people. Sir, we have, as per the 2011 census, जो 2011 का सेंसस है, उसके अनुसार टोटल अर्बन हाउसलेस पॉपुलेशन देश में 9,38,348 थी। ये अर्बन पॉपुलेशन, अगर इसमें आप ग्रामीण जनसंख्या को भी जोड़ लें जो हाउसलेस, तो ज्यादा होगी। अब हम अपनी तरफ से स्टेट्स को कहते हैं कि उसके पीरियोडिक 2-3 साल बाद इसको सर्वे करें, कितनी हाउसलेस पॉपुलेशन है, जो जैसे माननीय ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे फुटपाथ्स पे, या हाउसलेस होमलेस की परिभाषा जो है वो ऑलरेडी है। 2001 के सेंसस में ये परिभाषा बताई गई थी। हाउसलेस हाउसहोल्ड्स आर दोज who do not live in buildings or census houses but live in the open on roadside, pavements, in hume pipes, under flyovers and staircases, or in the open in places of worship, mandaps, railway platforms, etc. are treated as households. केंद्रीय सरकार के द्वारा सर हम डे NULM हमारी जो योजना है उसके तहत हम फैसिलिटीज देते हैं, और हमने इसके द्वारा जो SUH गाइडलाइंस है उसके हमने फाइनेंस किए हैं 1788 शेल्टर्स जो फंक्शनल है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से 2457 शेल्टर्स उन्होंने भी सैंक्शन किए हैं। टोटल होमलेस शेल्टर्स की कैपेसिटी 1,25,000 है, पर ऑक्यूपेंसी सिर्फ 50% है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये बेघरों को मुख्य धारा से में शामिल करने के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम, उनका लाभ पहुंचाने के लिए विभागों के बीच में कुछ समन्वय, कोई एक डेस्क, कोई एक पोर्टल ऐसा विकसित किया गया है क्या, ताकि उनकी आजीविका मुख्य धारा में वो समाज के साथ जुड़ सकें? So there are two aspects to, I think, the question that the honourable member is asking. One is, I think, the facilities which have to be provided within the shelters, and two, from the central government side, we are providing assistance through the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, के जितने भी होमलेस हमारे नागरिक हैं उनको कन्वर्जेंस जो है हमारी स्कीम्स की उसका लाभ मिले। Convergence of various entitlements of social security, food, education, healthcare systems are provided in the shelters. और shelters में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके भी हमने बड़े डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाए हैं। माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह है कि बेघर लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सभी राज्य सरकारों से एक बार आप बात करें, क्योंकि है तो राज्य सरकार का विषय, क्योंकि जमीन लैंड के मालिक राज्य होते हैं, लेकिन राज्यों से बात करते हुए किस तरीके से इस देश में एक कार्य योजना बने ताकि बेघर लोगों को मकान मिल जाए। सबका उद्देश्य यही है शायद ना।
राज्य सरकारों से एक बार मीटिंग करें, आप प्रयास करें, राज्य सरकारों को आग्रह करें। रवनीत सिंह, हाथ खड़ा करो। नो। थैंक यू स्पीकर साहब। सर ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲੋਕ ਬਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਘਰ ਸਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। राज्य का विषय नहीं, मैं ये उससे वो कहने से पहले मैं कहूँगा, वो कहते हैं कि मैं हूँ दिल्ली से पर दिल से पंजाबी हूँ। मैंने दिल से नहीं, बाकी इन ऑल रिस्पेक्ट्स आई एम ए पंजाबी एंड अ वेरी प्राउड पंजाबी। आई वांट टू अश्योर द ऑनरेबल मेंबर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक शेल्टर अंडर द आर्ग्यूमेंट कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और पंजाब में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। I join the honourable member in the sentiment. I will join that sentiment and I will appeal to everyone concerned that people who are placed in that disadvantageous situation, they should be provided relief. And for them, in the case of Punjab, in any case, there are people outside the country who are willing to come and help, as the honourable member said. So I completely will join him and endorse that sentiment, so that in this, not only in whether in any climatic or in any part of the year when it's cold or not so cold, you have no right to demolish those people. I had taken exception to the use of that term even the other day in the other house, when I said there are norms which have to be followed, and at the heart of that is a humanitarian, should be a humanitarian streak, that people who are without a shelter, they should be provided shelter rather than their whatever temporary locations are demolished, if that word is used and appropriate in that incident, and then they are sent hundreds of kilometers away. So I join the honourable member in doing that. I join it everywhere, everywhere. There is, well, I am talking to those about those humanitarian situations. If somebody is other illegal, I'm not in a position to provide a guarantee on the behalf of the state of Tamil Nadu. I am not in a position to do that. If some illegal activity is being carried out in a particular state, माननीय मंत्री जी, आप बेटे बेटे लोगों का जवाब क्यों देते हो? वो भी बात सही है सर। प्रताप सारंगी जी। Sir, thank you for allowing me to participate in this question. There are many homeless people. This has been our experience in railway stations, footpaths, roadsides, flyovers. In spite of all these schemes that central government has implemented, they do not have a house to live in, sufficient food to eat, dress to wear, proper access to education or health care. So they live like beasts. Even they do not have any awareness that they are citizens of the country. They have forgotten that they are human beings. Sir, we cannot draw any demarcation line between centre and state. Sir, central government should urge upon the state governments, should impress upon the state governments to do their services. No doubt the government under the able leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is doing many things, but I think more aggressive steps is needed to give them food, education and shelter, as Swami Vivekananda puts it, that no amount of politics would be of any avail until the masses of India are once more well-fed, well-educated and well-cared for. Sir, they are living in a very dirty condition, and will the government fix up a deadline by which all these problems will be settled? 100% people will be rehabilitated. And in this land of Jagannath, Ramnath, Badrinath, Kedarnath, Vishwanath, nobody should be anath.
Sir, I appeal to the government through you to take steps within a specific reasonable time frame. Sir, the honorable member. माननीय मंत्री जी, Mr. Speaker, sir, the first part of the honorable member's comment on the existence of homeless people as per the definition is correct. But what he is perhaps not aware of is that the guidelines provide very detailed instructions on what needs to be done. And he also does not seem to be aware of the fact that the Honorable Supreme Court is monitoring this process and that states which are not complying have to actually respond. I have a state-wise breakup of states and union territories which have sanctioned and functional daycare centers. Food is being provided, shelter is being provided, standard, adequate bathing and toilet facilities, first aid kit, all that is being provided. In fact, the capacity of the shelters is 1.25 lakhs and the occupancy is only 50%. So it is very well for members to express concern, but they should be aware that the Honorable Supreme Court has set up for the state governments, this is a state responsibility, to form a committee under a retired secretary-level officer who is monitoring each of these. So as I said, I have all the statistics for each state and union territory. I'd be very happy to share that with honourable members if they would like to drop in and have a cup of tea with me. Question number 122, Srimati Chinta Anuradha. Question number 122, sir. माननीय सदस्य बोल दिया सर 122 सर क्वेश्चन नंबर टेबल का दोबारा कर दें उत्तर सभा पटल पे रखा गया ऑनरेबल मेंबर थैंक यू sir can the honorable minister provide the details of the outcomes achieved through the implementation of RCS Udan in Andhra Pradesh? Does the government propose to review said implementation to identify scope for further expansion and iron out the persistent difficulties? Sir, the Udan Yojana, as we are very well aware, was conceptualized in 2016. And under various rounds of Udan, many operationalized routes have been put in place in Andhra Pradesh. As of today, 28 routes have been operationalized in Andhra Pradesh. Two airports and one waterdrome have been identified for development in Andhra Pradesh. Kudappa as well as Paraskaram water barrage is being worked at a cost of roughly about 20 crores. And we will continue to pursue our development of Udan in every state across the country. Honorable Supplementary. Sir, is the government aware that poor financial health of many smaller regional carriers, which has been hampering the effectiveness of the scheme, especially since the pandemic hit? What specific steps have been taken to aid these smaller carriers and allow them to sustain themselves and compete with big airlines? So, as I mentioned in our answer earlier this week on RCS Udan, this is a very important scheme from the point of view. The member has raised a very pertinent question. We have tremendous international to domestic connectivity in our country. We have tremendous connectivity from Tier 1 cities to Tier 1 or Tier 2 cities. But what really needs to be strengthened is last-mile connectivity in our country. That last-mile connectivity in our country from Tier 3 to Tier 3 cities is being focused at within Udan. Within Udan, we are generally looking under a new part of the scheme that we have introduced in the last year, a sub-scheme called the Small Aircraft Scheme, where we look at only sub-20-seater aircraft to provide last-mile connectivity, both in terms of turboprop, jet, as well as helicopters. And I'm pleased to report to the House through you, sir, that in the last round of Udan, Udan 4.2, 132 routes have been awarded
of which the major sector, 16 are helicopter routes and almost 50 are seaplane routes. So our government is concentrating on last mile connectivity to make sure that the democratization of civil aviation does truly take place in the country. संतोष श्री बी चंद्रशेखर। संतोष जी है सर। पहले लिस्टेड नाम जो क्वेश्चन में बी चंद्रशेखर जी का, बी चंद्रशेखर नो। संतोष सिंह चौधरी। धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र आदमपुर एयरपोर्ट से कोविड के दौरान जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हो गई थी, स्पाइस जेट की फ्लाइटें चलती थी दिल्ली आदमपुर, दिल्ली आदमपुर जयपुर बॉम्बे। तो 1.5 साल हो गया वो बंद हो गई हैं और ये दुआबे का बहुत इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है और इसका नया टर्मिनल भी बन गया, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये कब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को बहुत भारी इनकन्वीनियंस हो रही है। दुआबा जो जलंधर है ये इंडस्ट्री सेंटर है, ये बहुत लोग वहाँ से NRI हैं, तो डेली यहाँ दिल्ली बॉम्बे आते हैं। तो काइंडली ये बताइए कि कब ये आप शुरू करेंगे। सर, नागर विमानन क्षेत्र एक डीरेगुलेटेड सेक्टर हो चुका है। इस डीरेगुलेटेड वातावरण में भी हमारी कोशिश है कि देश के कोने कोने तक नागर विमानन क्षेत्र से हम लोग कनेक्टिविटी दे पाएं। इसलिए उड़ान योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसकी पूर्ति करने के लिए। पिछले 6 वर्षों में 453 रूट्स हम लोग ने संचालित किए हैं। 70 एयरपोर्ट जो नागर विमानन के नक्शे से मिटाए गए थे देश में, उन्हें हम लोग ने दोबारा स्थापित किया है। और जहां तक सांसद महोदय ने आदमपुर की बात की, हमारी प्राथमिकता भी है, पर वहां 3 रूट्स चलती थी, आदमपुर दिल्ली और आदमपुर जयपुर। ये दोनों को भी हम लोग ने उड़ान योजना के अंतर्गत चलाया था, लेकिन 3 साल की अवधि होती है वायबिलिटी गैप फंडिंग देने की, वो अवधि समाप्त हो गई है। अगले राउंड ऑफ बिडिंग में हम लोग एयरलाइन से भी हम लोग बात करेंगे और उनकी रुचि होगी तो इसको हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल मेंबर कीर्ति वर्धन सिंह। So under the able leadership of our Honorable Prime Minister, all sectors of the country are taking remarkable strides on the path of progress, and the aviation sector is no exception. So it has been long bogged down by archaic rules and was neglected. But in acknowledgement of the rapidly rising middle class, a slew of reforms are taking the sector to new heights in terms of connectivity, infrastructure modernization, and fleet enhancement. So also the new policy on the annual regarding aerosports activities, this will further infuse the sector with new energy and the spirit of adventure. So in keeping with this growing demand for air travel and the increasing aerosports activities in our country, I would like to know through you from the Honourable Minister, sir, that is the government considering further streamlining the process of granting permits for the operation of small commercial aircraft and other ultralight machines such as ultralight aircraft from privately owned airfields, as is in the case of helicopter operations today? Thank you, sir. Sir, this question is on RCS and on Andhra Pradesh in particular, but let me respond to the Honourable Member. He has raised a very valid new area of demand and growth for the country. Aerosports has a tremendous future and a tremendous potential in our country. In the West, where aerosports is extremely prevalent, in the winter season we can bring all of those aerosports to India because of the weather pattern as well in India. We have set up a aerosports organization which will be then decentralized into different state units, and we have mandated in terms of permissions and in terms of approvals. Each of those state units, along with the central unit, will certainly look at an easing of process so we can proliferate this across the length and breadth of our country. Shri Hasnain Masoodi ji. बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, इस साल जो सरकारी एदाद शुमार है उनके मुताबिक कोई 80 लाख के करीब टूरिस्ट विजिट किए श्रीनगर, और ये सारा जो ट्रैफिक है ये श्रीनगर एयरपोर्ट ये हैंडल करता है।
और बस की बात नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, 110 फ्लाइट्स आती हैं दिन में। तो मैं गुजारिश करूंगा क्या ये कंसिडर किया जाए कि अवंतीपुरा की जो एयर स्ट्रिप है जो ऑपरेशनल है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा, उसको ऑपरेशनल बनाया जाए या डिजिग्नेट किया जाए टर्मिनल 3, ताकि साउथ कश्मीर का अमरनाथ यात्रा और पहलगाम के एरियाज जो हैं वो कवर हो जाए और श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बोझ कम हो जाए। मंत्री जी, कश्मीर में माहौल अच्छा हो गया, इतनी फ्लाइट जाती है। सर, हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है और जो वातावरण हमने जम्मू एंड कश्मीर में निर्मित किया है, उसके आधार पर केवल आर्थिक प्रगति और विकास नहीं, राष्ट्र स्तर पर पर्यटन जम्मू कश्मीर में एक नया ऐतिहासिक मोड़ पर आया है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी आज जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित हो चुका है। तो सालों सालों और दशकों बाद एक अमन चैन का माहौल और एक आर्थिक विकास और प्रगति का माहौल आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज स्थापित हो चुका है। और इसका स्वयं वर्णन हमारे सांसद महोदय ने अपने एक प्रश्न में किया। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर्यटकों का श्रीनगर में आयोजित हो चुका है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय की प्रतिबद्धता है कि श्रीनगर की एयरपोर्ट की विकास और प्रगति भी हम लोग निर्मित करने वाले हैं। 1000 करोड़ रुपए का जो वर्तमान का टर्मिनल बिल्डिंग है उसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, ताकि आधुनिकता के साथ एक पूर्ण रूप से हमारे सारे पर्यटक और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी सुविधा और सुगम सुविधा हम लोग पूर्ण रूप से दे पाएं। जहां तक प्रश्न अवंतीपुरा का है, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक सैटेलाइट एयरपोर्ट है और हम लोग JNK के यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाएं। पर श्रीनगर के लिए केवल नहीं, लेकिन जम्मू में भी एक्सपेंशन प्लान करीब 800 करोड़ का है। दोनों शहरों में एक आधुनिक, विकसित और बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। कीर्ति चिदम्बरम जी। Sir, has the ministry considered giving an approval for an airport in Chettinad, Shivaganga, Tamil Nadu, which has an unused airstrip? So, as far as Karti ji's question is concerned, we are very clear. We have identified a number of airstrips, unused airstrips across the country. All of these airstrips are a part of the Udan Yojana. If he will come and meet with me, I will certainly discuss that with him. But indeed, if that particular airstrip is not a part of this current list, the state government has to put in a request to us, and we will certainly include it. And then we will take it forward depending on the state government's Question number 1, 2, 3. Shri Kishan Kapoor. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1, 2, 3। अध्यक्ष महोदय, जवाब पटेल पर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर सभा पटल पर रखा है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 365 का प्रावधान का विवरण भी दिया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 अनुच्छेद 226 का भी यहाँ हवाला दिया गया है जी। इसके बावजूद भी मामले बहुत अधिक है जी सभी राज्यों में, उसका मैं दूसरे सप्लीमेंट्री में कहूँगा। पर जहाँ भूमि अधिग्रहण, वन भूमि सहित अन्य भू राजस्व आदि मामलों के कारण संभव नहीं हो पाता, क्या मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के उस विशेष हिस्से का पुनः सर्वेक्षण करने पर विचार करता है ताकि राजमार्ग कार्य अविलंब प्रारंभ हो सके और DPR में संशोधन के बाद जो भूमि पूर्व में अधिग्रहित की जाती है क्या उसे वापस मालिकों को लौटा दिया जाता है? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मान्य सदस्य कह रहे ये समस्या है। अभी हमारे देश में काला ने निर्णय करने के बाद 1,74,327 केसेस पेंडिंग है और स्वाभाविक रूप से उस केसेस में निर्णय होने के बाद हाईकोर्ट में जाती है, फिर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर हम हाईकोर्ट के लेवल पर या उसके काला आर्बिट्रेशन के निर्णय पर मान्य करते हैं तो इंक्वायरी करने वाले पूछते अधिकारियों को कि आपने अपील क्यों नहीं किया, उसके इंटेंशन को चैलेंज करते हैं।
उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता और इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफर होता है। वैसे जो काला होता है हमारे देश में, लैंड एक्विजिशन जो होता है वो राज्य सरकार का और भारत सरकार दोनों का अधिकार है, क्योंकि ये कॉन्करेंट है। कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, और हमारा भी 1956 का एनएच का एक्ट है। पर ये सब बातों को देखते हुए काला ने निर्णय करने के बाद ये जो आर्बिट्रेशन में केसेस जाती है इसकी संख्या कम हो और ट्रांसपेरेंसी से कम समय में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल और फेयरली निर्णय हो, इसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमने एक विशेष रूप की योजना की थी, भूमि राशि पोर्टल खोला था, उसमें हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर 11,808 नोटिफिकेशन निकाले और कुछ राहत मिली है। फिर भी अभी समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर सब लोगों से चर्चा करके हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में काला के निर्णय के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर, टाइम बाउंड ऐसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है क्या, जिसके कारण ये कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है और जिनके ज़मीन जाती है उनको ज़मीन के पैसे भी नहीं मिलते। दूसरी और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इस कानून में एक बात ऐसी भी रह गई है कि हम जहां ज़मीन एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारी अलाइनमेंट बदल जाती है तो हम उनको ज़मीन भी वापस नहीं कर सकते और हम पैसा भी नहीं देते। तो ऐसी कानून में उसकी प्रोविज़न नहीं है। तमिलनाडु के एक एमपी है, उनकी समस्या है, हम उसको सुलझा नहीं पा रहे। तो इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और सिस्टम को कैसा करें इसको हम सोच रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री भी सोचेंगे, राज्य सरकार का भी ओपिनियन लेंगे और आप लोग भी कुछ सुझाव देंगे तो उसका विचार करेंगे, पर इसमें सुधारने की आवश्यकता है, इस बात को मैं मान्य करता हूं और 1 महीने के अंदर इसके बारे में हम जरूर निर्णय करेंगे, क्योंकि ये केसेज जो है 1,74,327 और सम्मान्य सदस्य जिस राज्य से है हिमाचल प्रदेश, वहाँ 6,518 केसेस पेंडिंग है। अब मुझे बताइए 4 लोकसभा का ये छोटा से राज्य में 6,518 और हमारे कभी कभी 1,000 2-2 हज़ार करोड़ राज्य सरकार में एक साल डिपॉजिट पड़े रहते पैसे, वो काला में ब्याज लेता है और बैंक वाले मेरे पास आते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए बोलो। तो ये पैसे हमारे पास है, पैसे देने के लिए हम तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है, पर सिस्टम ऐसी बनी है कि इसमें हम कर नहीं पाते। तो कानूनी थोड़ा उसमें और सुधार करके निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। ऑनर मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो मामले हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मामले तो आपके गृह राज्य से हैं 37,327 जी, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। वो तो लिस्ट पढ़ ली सबने, आप तो प्रश्न पूछो। और पंजाब और हरियाणा भी है तीसरे नंबर पर। ये जो मामले हैं ये कब से लंबित हैं जी? और अभी मंत्री महोदय जी ने कहा कि इनका निपटारा हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए कितना समय लगेगा? क्योंकि हमारे वहाँ कहावत है, भू राजस्व के जो मामले होते हैं अगर दादा केस कर दे तो पोता भी लड़ता रहता है जी। एक कब तक इनका निपटारण होगा जी? मैं सम्माननीय स्पीकर महोदय एक बात स्पष्ट कर दूंगा, इससे वैसे डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है। मामले जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो काला है, वो निर्णय करता है, फिर उसके निर्णय के ऊपर अपील होता है कमिश्नर लेवल पर। कमिश्नर जो होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का है सभी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का कमिश्नर अपनी पावर डिप्यूटी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को देता है। फिर मेरे पास इतनी तकरारें आई है कि वकील जो काम करने वाले वाला है क्वेश्चन में वो और ये वहाँ मिलकर ऐसा निर्णय देते हैं कि अब मेरे पास ऐसी केसेस है, आखिर ये जनता का पैसा है। ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं कि जहाँ 1 करोड़ देना है वहाँ 10 करोड़ अवार्ड हो जाता है। फिर उधर से लोग तकरार करते हैं कि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो। तो ये पूरा मामला जो होता है ये सिस्टम राज्य सरकार के अधीन है। मैं आप पूछ रहे इसलिए मैंने डिटेल में बताया, मैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना नहीं चाहता या उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये उनका अधिकार है। मैं इतना ही कहता हूं कि आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू चेंज द प्रोसीजर ट्रांसपेरेंटली, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव एंड करप्शन फ्री। और ये
सर प्रॉब्लम ऐसा है कि आई हैव टू कम टू यू, आई हैव टू चेंज द लॉ after passing the bill, and before that the stakeholders are state government act is there. I cannot take decision as I like it. I need to take the advice from the judiciary, from the high court, from the district collector, from the state administration, and after that I need to make that law, and that is to be a complicated procedure. It is already in the concurrent list. The state list where state is supposed to make the law, the central list, the central government is supposed to make the law, and the concurrent list, both are the stakeholders, and this is in concurrent list, and that is the problem that we need to concern with all the stakeholders and find out the option on it. We are in the process. I will try my level best that to make it as early as possible to make it this law for the country. माननीय सदस्य श्रीमती बंगा गीता विश्वनाथन। Thank you so much, sir. To Chairman, sir. Sir, I convey my thanks on behalf of Kakinada parliamentary people to Honorable Minister for sanction of 516F new NH to Kakinada, sir. Thank you so much, sir. And I would like to know from the Honorable Minister, according to answer, thousands of cases are pending with regarding NH, sir. Sir, in my constituency, Komargiri village is there, sir, in Pittapuram constituency. Sir, surrounding areas are getting, farmers are getting 51 lakhs. But this area is in only 27 lakhs. In these days, day by day, land acquisition cost is rising, sir, land cost. Please do with humanitarian grounds according to your level. And I would like to suggest one issue, sir. Regarding arbitration, the collector is saying with arbitration only 30% is there, sir. I know you already said in the answer, sir, collector is there any, sir, is there any team for rising the arbitration amount from 30% to 60%? Honorable member, please. Thank you, sir. सम्माननीय स्पीकर महोदय, आपको भी शायद ये पता होगा, आजकल लोग मेरे पास हमारी लैंड रोड में लो मत, अलाइनमेंट बदलो, इसके लिए कोई नहीं आता। मैं हमारी लैंड लो और एमपी साहब आते इधर नहीं, इधर से लाओ, इधर से लेके जाओ। इसका मतलब यह है कि बाजार भाव से भी अच्छी प्राइस मिल रही है, 4 गुना। लोग खुश है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह पर लैंड जो होती है, ये इसका जो लैंड यूज होता है वो एग्रीकल्चर है कि अर्बन है। तो इंडस्ट्री एखादी खड़ी होती है, वो पावर मीटर लेता है, वो बोलता है मेरी लैंड इंडस्ट्रियल है, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है ये एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर का रेट अलग है, इंडस्ट्री का अलग है, अर्बन का अलग है, फिर उसके डिस्प्यूट होते हैं। ये इसी प्रकार के इशू है। तो मैं आपको एक ही बताऊंगा कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें जल्दी निर्णय नहीं होता है, रेट ज़्यादा है। और मैडम आपको बताओ, उत्तराखंड में हमने निर्णय किए और ज़्यादा भाव दिए, तो हमारे अधिकारियों की फिर इंक्वायरी होकर राज्य सरकार ने रिकमेंड करके सरकार बदल गई। तो हमारे अधिकारियों की इंक्वायरी जब सीबीआई में, तो उनको पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं किया, आप चुप क्यों रहे। तो अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वो बोलते निर्णय कैसे करें। तो सब बाजू से थोड़े बहुत समस्या है, पर पब्लिक इंटरेस्ट में और आपकी भावना को लेकर 1 महीने के अंदर इसके ऊपर पूरा सोचकर सब स्टेक होल्डर से बात करके हम कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। Answer of the Honorable Minister regarding the payment of compensation. I have a very few. You see, in 2013 Act, Land Rehabilitation and Compensation Benefit, etc., that replacing the Land Acquisition Act, the Act came into force. Then the Act was amended when you have come into the power. Now there the compensation principles have been laid down. That's the compensation benefit has been given in the land acquisition cases. Why you are not extending that benefits which have been given in the land acquisition, in 2013 Act, in the National Highways Act? If that principles have been laid down, then the problem will be resolved. Regarding the determination of the compensation amount is concerned, that's the point. Now, whether anybody is aggrieved or not, that's the later part. They will go on later on arbitration, 220, 30, leave aside all that things. And sir, I tell you one thing.
The most important questions in India is now in every compensation matter, any benefit is given, either state government or central government, they are without giving this compensation benefit to the land losers. Okay. They are more willing to go to the High Court and Supreme Court, reduce the litigations, give the benefits to them. Sir, that's my suggestion. Although it's in the form of questions I have raised it, but this is a suggestion to you. सर ये अध्यक्ष महोदय 2013 में ये लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने ही पेश किया था पार्लियामेंट में। मुंडे नहीं 2015 में गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाद में टेम्पररी मैं उस खाते का डिपार्टमेंट का मंत्री था और ये बिल अरुण जेटली जी मैं उस समय हमने बैठकर तैयार किया था। पर आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हो वो भावना बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में ये मामला आता है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने अपील क्यों किया, तुम ज़्यादा पैसा क्यों किया, इंटेंशन चैलेंज होता है। अब यह ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और इसलिए हमको राज्य सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करती है राज्य सरकार, हम केवल पैसे यहाँ से लेके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कलेक्टर उनका, काला उनका, कमिश्नर उनका, वही सिस्टम में हमको काम करना पड़ता है। मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि एक तरफ कॉम्पेंसेशन के रेट काफ़ी रिजनेबली बढ़ गए हैं। अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। केरल के एमपी यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूँ, अभी हम एक हाईवे बना रहे केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है, 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा। फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जाम करो और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीज पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आएगा, तो कहां से बना पाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूं और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस, आई एम ओपन फॉर दैट, and after that by taking suggestions from all the stakeholders we will finalize the thing and we will come to the parliament and we will tell you. Question number 124, Shri N. Redam. Yes. Thank you very much, sir. Question number 124, sir. Sir, a statement is laid on the table of the House. Thank you very much, sir, for your elaborate answer. Apart from this, regarding my supplementary question, the government has taken any special measures to study the climatic and geographic peculiarities of Andhra Pradesh before developing these plans, and do the master plans account for the fact that the Andhra Pradesh is very sensitive flooding? Please elaborate. Sir, I would like to reiterate what is already in the body of the answer to the question, that urban planning is a state subject and the functioning of urban local bodies, urban development authorities is the exclusive prerogative of the state governments. Having said that, I have also said in the answer, and I would like to elaborate, that what we do is that under the Amrut scheme, which is a scheme applicable to those cities which have a population of over 100,000, and there are 500 such cities, we provide some financial assistance for the state governments and union territories to formulate what are called GIS-based master plans. Sir, the incentivization and encouragement from the central government is intended to ensure that the use of technology and geographical information systems circumscribes and then finally weeds out
any diversion, leakage, or corruption. And under this, for the state of Andhra Pradesh, we have given 26 cities, including the city of Visakhapatnam, are covered. 461 cities which are under Amrut from 34 states and urban union territories have opted for this scheme. Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep have not opted, some of them because they don't have urban populations. Sir, 2 states, Kerala and Madhya Pradesh, are formulating master plans in-house and 32 through outsourcing. Whenever a state government or a union territory formulates its master plan, it must necessarily take into account not only the factors which the Honourable Member has mentioned, factors such as climatic vulnerability, and the Honourable Member mentioned those that result from the elements of nature, flooding, etc. Some states, coastal areas in particular, are more vulnerable. They will have to take it into account. We, on our part, only provide incentives through financial support. Out of this, we have already provided a total of 15 crores for these 500 Amrut cities. And now, under Amrut 2, sir, we are carrying the scheme forward to those cities which did not qualify under Amrut, but which have a population from 55 to 99 lakh. Under the reforms of Amrut, all cities have to map their water bodies, rejuvenate water bodies, carry out green areas, and these steps the master plan should take into account because these provide sensitivity, both in terms of vulnerability, sometimes there's excess water, sometimes there's drought, but then I don't think the states and union territories would want the central government to do this, because this is very much a part of the constitutional division, and I think most states would be wanting to preserve their jurisdiction when it comes to the preparation of such master plans. Honourable Member Supplementary? No? Sir, what steps has taken the government has create local capacities in the area of town planning and management in Andhra Pradesh, sir? The specific question that the Honourable Member is asking is about capacity building, and I'm very happy to inform him that under the same scheme, we provide capacity building and training, and so far we have trained 2,606 officials through 73 training programs, and this includes 61 from Andhra Pradesh, out of which 25 in particular are from Visakhapatnam. Jaidev Gallaji. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, there are 2 aspects to this question. One is preparing the master plan for cities, and the other is the development of cities for which master plans have already been prepared, sir. Sir, Amaravati, the capital of Andhra Pradesh, which I represent in this House, is one such city for which a master plan has been prepared and development projects of the city have also been taken up. The work of various projects went on well till 2019, but after that the ministry has stopped executing the works. Since it is question hour, sir, I'll be very specific and pointed and request the minister to be specific and pointed as well, sir. Sir, as far as I can remember, 25 work orders under 20 projects with an estimated cost of 2,000 crores under the Smart City mission have been issued for Amaravati in Andhra Pradesh. But not even a single work has been completed till date, sir. So I would like to know from the Honourable Minister, what are the reasons behind this and by when the government is going to complete these projects? Thank you, sir. Since the Honourable Member wants me to be precise and specific, I'm delighted to do so. The question 1 to 4 is on the preparation of master plans and what assistance the central government provides by way of incentivization for preparing GIS-based master plan. The Honourable Member has moved from there to a project under the Smart Cities mission, which is executed by a body which executes, and there are 100 such smart cities, sir, including the one that he is referring to, and this body oversees the design. First of all, each smart city is to come up with a set of projects
That is the basis on which it got elected or selected. Then, once that is done, they have to execute those projects. As far as I can see, the Amravati, and I have some statistics with me, the total number of projects which have been identified are 21. The cost is 2,046 crores. The projects are ongoing, and the completion is, as he rightly says, leaves much to be desired. The financial progress, we have released 488 crores. The Government of India share transferred to the special purpose vehicle is 488 crores. State share transferred is 488 crores. Expenditure of the Government of India is 488. Expenditure of the state is 290. The expenditure release is 80%. Insofar as the projects, their exact state physical, since this is not part of either the question or the, if I may respectfully submit to my friend, the honourable member, this was, when we come prepared for answering questions, we anticipate supplementaries. But this question is so far removed from what I had come prepared. I'd be very happy to invite him for a cup of tea or coffee, sit down with him. I will also call the whoever is the headmaster of the special purpose vehicle, and we will get the details and find out what the precise stage of each project is. Because Badruddin, whatever you Ajmalji, prefer, and depending on the time of the day, if you'd like to come a little in the evening, we can organize that too. सर मैं मंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से गुवाहाटी से आता हूँ और गुवाहाटी जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का आप जा चुके हैं, वो गेटवे है, लेकिन उस शहर की जो हालत खराब है हजरत सर, वो बहुत बुरी हालत खराब में है। जरा सा बारिश हो जाती है, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक पानी चला जाता है। लास्ट ईयर तो रिकॉर्डेड बारिश हुई, किसी गली में जा नहीं सकते थे। आसाम के लोग इसके प्रोवाइड करेंगे कि उसको एक टूरिस्ट एरिया भी है, तो क्या मास्टर सर इसको मास्टर प्लान में लेंगे, या लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं लिया है तो जरूर लेंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। Sir, as I mentioned earlier, and I'm happy to reiterate, the preparation of the master plan is a function which is carried out by the state government. And I have no doubt that the state government, in the preparation of the master plan, will certainly factor in the points made about excessive rainfall or the climatic vulnerability, which we are all very familiar with. And I'm sure I would be happy to sit down with the honourable member and talk to the state government and find out what exactly is the state of preparation. I am told that the state government is still to prepare a management plan, aquifer water management plan under Amrut. So we are in touch with the state government precisely to do that, but my offer stands. I'll sit with the honourable member and with the state government representatives to find out what the stage of the preparation of that plan is. Shri Manikam Tagore ji. Sir, thank you so much, sir. Sir, in the reply, Honourable Minister has replied that master plans have been approved for 152 cities, and a draft GSI-based master plan has been formulated for 132 cities. Among these cities, how many are from Tamil Nadu, and whether for Madurai Corporation and Sivagasi Corporation, any master plan has been approved? How much Government of India has allotted for the two cities of Madurai and Sivagasi? And Sivagasi Corporation is the youngest corporation in Tamil Nadu. Therefore, I request the Honourable Minister to be a little generous on Sivagasi. Thank you. I would like to share with the honourable member that generosity by the central government should be taken as a given. We provide money for the country as a whole. So, as I said, for the preparation of master plans in 500 cities, which are covered under the Amrut Yojana, we have provided, I think, if I remember offhand, a total of 631 crores or thereabouts. I stand to be corrected on the precise figure. Now, all the cities in Tamil Nadu, which are Amrut cities, have the option of availing of that facility. Insofar as whether Madurai or any other particular city has availed of this is something that I am in the process of ascertaining, and even whilst we speak, if I have the answer, I'd be happy to place it. Otherwise, I'd be happy to meet my friend and
share that information, because I carry the broad framework, but this is a state government issue, whether they have, I know 461 have availed of it and they are under preparation. But whether a particular city has prepared it already or is in the pipeline, I'd be happy to share that. Question number 125, Sri K. Muralidharan. Question number 125, sir. Sir, a statement is laid on the table of the House. Sir, the petrol price in India was 7.41 per litre in May 2014. 71. When the international 71. When the international crude oil price was US dollar 106.86 per barrel, but today the petrol price is more than 100 per litre, when the international crude oil price is US dollar 7.799 per barrel. 77. So 77.99 per barrel. I would like to know why the petroleum products price in India is not maintained or reduced in corresponding with the international crude oil price. I want to thank the honourable member for making it rather easy for me. I want to remind the honourable member that prices of petrol and diesel were deregulated in 2010 and 2014 respectively. We have on our own done a study of what happened in 2014, and we've done a study for 7 to 8 years, starting 2014. And I'd be happy to share those details with my friend. I don't know whether I have the study with me just now, but I can remember offhand. In the last 8 years, the increase has been the lowest since 1974. Because I know 1974 and 1973 because that's a time when I was a student in the university and I had the privilege of filling up on the bunk on a two-wheeler periodically. So today, typically what has happened is that international, because we are deregulated, the price of petrol at the bunk is determined by the cost of production as per the indices which are available, the cost of transportation, that is the freight, insurance charges, and the exchange rate, because you're paying in a dollar. Now, I don't know what today the dollar rate is X. In 1974, it was very different. Then you add to that the refiner's margin, dealer's margin, and then the central government excise and the state government's VAT. The central government, in order to maintain the price at the bunk at a reasonable level, reduced the excise duty on 2 occasions, in November 2021 and May of 2022. And I'm happy to inform you that some other states also reduced the VAT. Now we have a situation where some of the states, I'm not calling them BJP states because there are 1 or 2 others which have also reduced their VAT. Some of them are charging VAT at the rate of 17 rupees. Other non-BJP states are charging at 32 rupees. So there is a differential. When the honourable member was saying today the cost of petrol is 100 in some places. In some places, non-BJP states, in others it is 8-10 rupees cheaper. Today, the important issue is, at a time when the global situation, I'm talking about the geopolitics, is facing many uncertainties. Let me give you the example of petrol prices. Petrol prices internationally went up by a large margin. They went up by percentages which are, sometimes 40% higher, 50%. In India, petrol price increased only 2% during that representative period between 21 and 22. Why? Because we reduced our excise. And we urged states also to reduce their VAT. Some did, some didn't. Now what has happened is that the ability to keep the price steady and allow the increase of petrol only at 2%, while internationally it went up by a very large percent, was because the OMCs, as good corporate citizens, took a loss. The OMCs, for instance, I have some figures here which are very telling.
at a time when they made the profit before tax of rupees 28,360 crores in H1 of financial year 2021-22. This is a profit before tax of 28,360 crores. These three companies, IOCL, BPCL and HPCL, now in the H1 of the further year, they have booked a combined loss of 27,276 crore in H1. So it is a combination of the central government's reduction of excise at a time when we were going through a very difficult period and there were other expenditure liabilities, state governments reducing their VAT. So today petrol prices in India are perhaps the lowest. I normally like to choose my words carefully because when I look at honorable members, they will then come up, no, here is so. I used to say the average price of crude of the Indian basket increased by 102%. It went up from $43.34 to $87.55 between November 2020 and November 22. The retail price at that time, when it was up by 102%, of petrol went up only by 18.95%. Now, how much of this is the exchange rate variation? That is one question. But I think a government which is committed to energy security and affordability. By affordability, I mean it's not a question of just making energy available at the bunk at reasonable prices, but also ensuring that in the process of doing that, you don't disrupt the system. You've seen, the honorable member would have seen, sir, what has happened in neighboring countries, where for the love of money, you could not get energy. In fact, we ourselves provided some assistance to them of, I think, up to $4 billion or no. We, therefore, have ensured that throughout this crisis period, there was never any shortage of petrol or diesel, and the prices did not go beyond what. Ideally, we would like to have the prices come even lower. But as I said, you have to navigate through what is doable rather than. I have also here figures of how much the percentage increases were in other countries. In the US, 144%. Honorable Mr. Speaker, sir, I am very happy to share details. And I'm also your disciple. I follow your instructions. I don't respond to things which are said when people are sitting. But let me say, I think this is an occasion where the honorable members सब दिया हुआ है. तो अगर मुझे आपको लगता है मुझे मौका. Sir, I also want to share with you that today, if you look at the international prices and our prices, I was hoping the honorable members will contribute that in their states also, the few that are left, that they will bring the prices down there also through a reduction in VAT. But I don't see that happening. Mr. Speaker, sir, sir, the issue here is today when we are negotiating, we have reached to the point of the 5th largest economy. We will soon be the third largest. Energy is the driver of economic strength. And I would like to point out that the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. So the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. Sir, ये 5 states हैं जिन्होंने काम नहीं किया और उनके माननीय सदस्य जो इन स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया है. अरे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा
माननीय सदस्य अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें और फिर आपके स्टेट में ही वो दाम कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे यू कैन देन जॉइन द मेन स्ट्रीम सेलिब्रेशन। वैट प्रश्नकाल समाप्त। इन स्टेट्स में प्रश्नकाल समाप्त। मंत्री जी प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। आइटम नंबर 2 श्री वीके सिंह जी। वीके सिंह जी। स्पीकर सर, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 2 of the revised list of business. सभापति जी 30 से ज्यादा। Item number 3, श्री कृष्णपाल जी। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्री रामेश्वर तेली जी। श्री संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री हरदीप सिंह पुरी जी। श्री जी, आइटम नंबर 6। Sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Kaushal Kishore, I rise to lay the papers listed against his name as serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7, श्री जॉन वर्ला जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 में उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7A, महासचिव महोदय। Sir, I have to report that Rajya Sabha has returned the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Second Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha with amendments. Sir, I lay on the table the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Second Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments. आइटम नंबर 8, श्री जुएल ओराम जी। श्री रतनलाल कटारिया जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथाविध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। थैंक यू। आइटम नंबर 9, श्री जगदम्बिका पाल जी। Sir, with your kind permission, I wish to lay the following statements, Hindi and English version, of the Standing Committee on Energy. Action taken by the government on recommendations and observations contained in Chapter 1 of the 28 Report 17th Lok Sabha of the Standing Committee on Energy on action taken by the government on recommendations and observations contained in the 17th Report 17th Lok Sabha of the Committee on the Subject Action Plan for Achievement of 175 gigawatt renewable energy target. Number 2, action taken by the government on recommendations and observations contained in Chapter 1 of the 20th 9th Report 17th Lok Sabha of the Standing Committee on Energy on action taken by the government on recommendations and observations contained in the 18th Report 17th Lok Sabha of the